This is the show about science, facts, अरे philosophy. एक मिनट कर कौन रहा है कौन सा इंट्रो है ये वाला ना ये वाला अर्नव जज करना थोड़ा. Approximately 10 hours later. This is a show all about science, facts, philosophies, conspiracy theories, and personal stories. Welcome back to Breakout Boredom, the show where we talk about stuff and you break out of boredom. And it is अरे यार मत करना यार. One eternity later. This is a show all about science, facts, philosophies, conspiracy theories, and personal stories. Welcome back to Breakout Boredom, the show where we talk about stuff and you break out of boredom. And in today's episode, we're going to talk about aliens. This episode is something like science facts for me, conspiracy theories for Arnav, and pretty much like personal stories for Dev. I am not a conspiracy theories guy. I mean, मैं सुनता हूँ, but I just generally it's so horrendous. मतलब इतना poor execution of a conspiracy theory होता है that I just don't believe in it. I don't. conspiracy theories are only as good means they should be based on some proof like for example there's fact X fact Y अब उनको relate करने के लिए कोई theory बनाए then that theory makes sense. Like I like those conspiracy theories जो like हर जगह हर domain को cover कर लेते हैं. Like the government is the Illuminati, who along with aliens created the pyramids, जो time travel करके spaceships हवा में भेजते हैं. Don't ask me time travel और spaceship का क्या connection है, बस है. Aliens is a topic that has intrigued humans ever since the Harappans. Like Egyptians के sculptures में भी कोई weird shapes मतलब they like Egyptian की जो we say writing थी it was more of a photo based writing. I'd love for you to tell me. तू बस इजिप्शियन लोगों की जो राइटिंग थी उसको उसके लिए एक वर्ड है वो प्रोनाउंस करके बताना मेरे को प्लीज. नहीं मैं नहीं बोल रहा मेरे को मालूम है वो मैं बोल नहीं रहा इसके वजह से Photo based. फोटो निकाल के चिपकाते हैं क्या बोल रहा है तू? तू अपने स्लैम बुक्स बना रहे हैं. हाय मेरे एलियन के साथ तू सेल्फी. नहीं उधर से कोई मतलब कोई जो कैरेक्टर्स है जो अभी भी मतलब there is some meaning to them but people interpret it in a different way तो लोग बोलते हैं कि even Egyptians thought about aliens in those times and even today like astrophysicists and astrologers think more about stars and shapes of between stars but yeah people in that domain still think about it and even normal humans like us. आई थिंक वो जो इजिप्शियंस और पिरामिड्स और वो सब एलियंस का है ना, दैट्स लाइक a really racist statement. How is it racist? Like colonizers ने देखा, ठीक है, बड़े बड़े पिरामिड्स को, स्फिंक्स को. You are telling that the Egyptians weren't skilled enough. ये लोग तो कर ही नहीं सकते. ये इंफीरियर लोग हैं, ये लोग से तो हो ही नहीं सकता. बेस्ट ऑप्शन एलियन ने किया रहेगा. That brings me Like- to another thing. Aliens are मैंने किधर तो कोई comment पढ़ा था. Aliens extraterrestrial life forms which only appear in the US. I mean बस उधर आते हैं मतलब कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ही जाऊंगा. नो 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 इंडिया Bonku नो Babu. एशिया उधर नहीं जाऊंगा मैं. बस मैं यूएस में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा. बोंको बाबू आया था पर Good. If I think any of you are considering taking aliens as a career choice, so just guess that like you wouldn't even believe कि दुनिया में एक ऐसा डिक्शनरी में एक ऐसा वर्ड है which is there for people who study UFOs. The study of UFOs. Guess करेगा कोई क्या बुलाते हैं उसे? बोल ufology. That is exactly it. It's called ufology. उसका स्पेलिंग ufology है, उसको ufology बुलाते हैं, and people who study ufology are called ufologers. Ufologer. So you ford a lodger. Please.
something अभी something. अभी मैं सोच रहा हूँ like यूएफोलॉजी देख में यार जब भी aliens की बात होती है ना तो do they exist is like the one main big question with a big question mark. But like see there's a spectrum. People are with it that they exist. Some people are towards the end that they do not exist, and some people are neutral. Like they don't really know. Like they think maybe, maybe not, and people are that like they are different positions on that spectrum. But like the way I see it is if in a solar system that is this small, like not even the size of an atom compared to this room, when we compare the room with the universe and the solar system with the atom, मतलब उससे भी छोटा है and we cannot even fathom that scale. तो मतलब अगर इतने से पार्टिकल या सोलर सिस्टम में लाइफ हो सकती है, इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, तो मतलब यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिल सकती. that is exactly what the Fermi paradox states. हम्म. This फर्मी this thing called फर्मी Fermi. हाँ तो मतलब फर्मी पैराडॉक्स he tried to make an equation out of it but he made one and but क्या तेरे को पता नहीं. मेरे को पैराडॉक्स Equation पता है, इक्वेशन नहीं पता. equation बनाया था उसने. he made an equation About लाइक प्रॉपर इक्वेशन था, वेरिएबल्स थे, क्या ये मतलब ऐसा होगा, लाइक अब वो मेरे को इक्वेशन याद नहीं है, मैंने पढ़ा था okay. कहीं, एक्चुअल इक्वेशन है. लेकिन हाँ उस Like, इक्वेशन से नहीं ये मिलेगा. I mean, it just takes everything into account in a mathematical way, मतलब like a statistical way. I Okay, don't so know what. all I know about like the Fermi paradox is like there's so many resources and possibility for life to exist, intelligent life to exist or whatever in the entire universe, and if you would like to say the multiverse or whatever. तो इतने सारे possibilities है but of does the life. multiverse exist, like we Let have him no proof of continue. अभी रुक, आ, एलियन की आ, बात चालू है ना, मल्टीवर्स पे ए, मत जा. ठीक है, तू ठीक है डॉक्टर बोल. स्ट्रेंज देख के उसकी एडवाइस देता रहता है मेरे को कॉल पे. हाँ, That's all you बोल. know Doctor about the Strange is a multiverse. fantastic movie. Okay. पर बोल भाई. ओके, सो फर्मी पैराडॉक्स के बारे में इतना पता है कि इतने सारी रिसोर्सेस है, बन सकता है लाइफ, मतलब लाइफ होने के चांसेस रहने चाहिए थे. वी शुड हैव एनकाउंटर्ड लाइफ, येट वी हैव नेवर एनकाउंटर्ड लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट. But I think तू Hmm. बोल रहा था life और intelligent life तूने same sentence में use किया, and let me tell you there is a एग्जैक्टली. नाइट एंड डे डिफरेंस, मतलब नाइट एंड अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्यों डाला मैंने बीच में? डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड इंटेलिजेंट लाइफ, मतलब लाइफ सेल्यूलर लाइफ भी हो सकती है, इज वे मोर प्रोबेबल देन इंटेलिजेंट लाइफ, क्योंकि अर्थ में ही देखा जाए, मतलब टू ब्रेक दैट बैरियर ऑफ इंटेलिजेंस इज अ प्रीटी ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई थिंक humans are the only one who have reached that extent. मतलब तो बहुत सारे dolphins है ये है, but they have not reached like self. We can assess ourselves. मतलब there is a thing called a theory of mind. मतलब we have taught chimpanzees or apes to talk with us, but never in the history of chimpanzees or apes who talk in sign language with us, never have they asked the question. और वो क्यों? सो Because वो they think चिंपैंजीज और वो लोग जो गैंग साइंस करते हैं वो एक्चुअली साइन लैंग्वेज है. मतलब they cannot. gang signs की तरफ से आ गया. हाँ, yes, essentially they are doing that. They taught them sign language. So you are मतलब वो telling, so you are telling that sign language is gang sign. So like you are just now you are. Hmm. So anyway, as I was saying, मतलब they can say that I am hungry. मतलब उनको पूछा तो वो बोलते हैं I am hungry. नहीं तो वो वैसे भी बोलते हैं, और they communicate with people. They say I am angry today or whatever they might say. I want an orange. I want a pear. मतलब done बनाना. years. We have done years and years of research and talking with them, but never have we once ever recorded them asking a question. अभी तुम बोलोगे क्यों ऐसा? Because अगर मैंने देखा है ये ब्यूटीफुल फिश का पेंटिंग, अभी मैंने ये पेंटिंग नहीं देखा है. है एंड ड्राइंग, और मैंने ये ड्राइंग देखा एंड आई फाइंड इट प्रीटी नाइस, या मैंने देखा कि ये कोई कलर से बना है जो मुझे पता नहीं है, तो आई विल नेवर आस्क अनदर
a chimpanzee will never ask another chimpanzee कि ये कौन से कलर से बना है या ये कौन से मेथड से बना है, because they think कि तुम्हें नहीं पता, अगर मुझे पता नहीं है तो उन्हें भी पता नहीं है. They don't think that अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन कम होगी जो किसी के पास ज्यादा है, या मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी than the other person, their mind is not developed enough to even think that some people store different information other than the information they hold. तो वो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, या दे डोंट हैव सेल्फ इंक्विजिटिवनेस. बट एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट लाइफ. बट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर Aliens. दैट लाइफ इज योर इंटेलिजेंट लाइफ. मैं हाथ से नहीं दिखा सकता, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं वॉलीबॉल नहीं खेला. एनीवेज And again, I think हाँ intelligence. तो मैंने अभी खुद ही गलती की, yes. But the one thing that bothers me, like, is people imagine कि aliens will be way more intelligent than humans. But I don't हाँ. get that. Why can't aliens be like uh, the bacterial aliens क्यों नहीं हो सकते? या फिर कोई microscopic alien या फिर हाँ. less जब अपन intelligent? ढूंढ जब अपन एलियन लाइफ ढूंढते हैं द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ मतलब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वी ट्राई टू फाइंड इज बैक्टीरिया और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू एग्जिस्ट एंड लाइक सर्वाइव ऑल दिस टाइम लाइक 5 बिलियन ईयर्स और जितना भी अभी 13 बिलियन ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव I और think we will eventually find aliens, but what I think is that मतलब मैं पहले मेरा stance clear कर रहा हूँ. I'm a little more on the I don't believe side. On from the neutral, I'm not like extremist कि हाँ aliens नहीं होते तब सब लोग पागल हो. मतलब if there is credible proof, तो who would not believe? Like I am the agnostic person in uh, aliens. Agnostic people are people who don't believe in God, but they are ready to believe हाँ it if they have sufficient proof to do so. Unlike atheists who just straight up don't. Anyways, um, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था. I mean जितना मुझे मैंने देखा है, any distant star of ours with any reasonable length, like ऐसे 1 to 100 light years में, we have not seen any source of intelligent life which is sufficiently communicating with us, which और नहीं तो हमें obviously पता होता. और अगर है बट अ, अगर अगर कोई सिग्नल आया which is जादू से सिर्फ अर्थ पे आया, and we read it and we interpreted it for some reason because they use the same technology as us, मतलब वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि do they even like use the same amount of इवॉल्व हाँ हाँ, डू मैंने दे उस पर एक इवॉल्व इन द डॉक्यूमेंट्री सेम वे देखी है. मैंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, उसका नाम था कोई मिल गया. do they evolve the same way I mean मतलब there are multiple but there's a factors which, possibility okay there's a possibility that those aliens are trying to hide themselves because in their past they they may have faced other alien invasions so the proximity like the planets around us may have intelligent life shielding itself from other alien interference. I mean, as far as I think, the chances of that out of everything happening is pretty slim. But जितना हमने investigation किया है, there are slim chances of intelligent life, let alone life. और अगर हमें मिला भी, हमें एक सिग्नल आया from like 150 light years away, it's still 150 light years away. It will not happen in our lifetimes. So I think can comfortably say कि हमें ये lifetime में intelligent life नहीं मिलने वाला है. और मैंने वेरिटेजियम का वीडियो देखा था कि 2027 या 2028 में कोई तो रॉकेट जा रहा है टू सम प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जिसके मतलब कोर के पास लाइक हॉट स्प्रिंग जैसे होता है, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग, जिससे मैग्मा निकलता है. Venus हाँ, वीनस में सो इट कैन सस्टेन, मतलब वार्म वाटर है तो इट कैन सस्टेन लाइफ, मतलब सिंगल सेल probably लाइफ. Venus हाँ, या लाइक वेरी सिंपल aquatic लाइफ, और हाइपर इंटेलिजेंट वाटर hmm. बीइंग्स जो पता नहीं शील्ड कर रहे हैं खुद बट को. वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यार मतलब नहीं हो सकता उधर भाई हमारे गीजर्स में, मतलब गीजर मतलब घर का गीजर नहीं, मतलब जो कि वोल्केनो पानी ऊपर वाले मारता है ना वो, हाँ. हाँ वो वाला, अर्थ वाले मतलब गीसर्स उसमें भी बैक्टीरिया होता है. मतलब आई देयर इज अ, मैंने अरे फेरिटिशियम का वीडियो उसमें भी देखा था. दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट डिस्कशन. बट एनीथिंग इज पॉसिबल इफ द organism is evolved to fend off against any variables it faces.
I mean, वो क्वेश्चन में नहीं है. but like हाँ Venus पे ऐसा हो सकता है because Venus has transformed. We know that Venus was an Earth-like planet. So Hmm. it can happen that once upon a time उधर थे अपने जैसे creatures and due to the increase in temperature they died off and only some remained which could adapt to that increase in temperature. I mean it is possible, but that's why I lie on that stance कि हाँ मिल सकते हैं, मिले भी तो it's not a really big deal for us like you and me. Like for humanity, that's a great thing. I don't think humanity is surviving long enough to meet aliens. मतलब at that course मतलब climate but change सब कुछ देख के भी मुझे लगता तो नहीं होता sustain कर पाएंगे खुद को at like a large scale. So I don't but know what's the point. Earth is in a heating cycle. So like पता है ना Earth की cycles होती है ice age, then a heating cycle, then an हाँ. ice age again, then a वो. So we are in a heating cycle, but humans are just aggregating that heating cycle by climate change. Or aliens, like in support that aliens exist. The, one of the most common elements found around is carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, because they are very stable. So Silicon. ये and silicon. But the things that we are made up of as organisms, carbon, we are carbon based organisms. पता है? Like that's Hmm. a basic fact. And carbon is a very sticky element. It forms chains with everything. मतलब itself and everything else. Probably don't call it sticky, okay? Sticky है. Don't call it sticky. You can मतलब it basically bonds with almost everything. So Active. like if स्टिकी एलिमेंट इज अ नाइस वर्ड स्टिकी बोलूंगा हाँ तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना कार्बन है और यूनिवर्स में भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है कार्बन तो इफ वी कुड form like if carbon based organisms could form here they could like hypothetically or possibly form somewhere else as well. Do you हाँ. guys think, like, apart from the current, like, alien है कि नहीं है thing, let's just assume कि alien होता है, ठीक है? So in that case, do you think like humanity should or should not contact alien life? Like, if That try to contact at least, because there are just so Do many not people contact it. who say that. that depends on what stage of evolution और मतलब हम पहले उनको observe करते हैं. So I mean अगर they are But at a they stage कि should be वो बहुत capable कुछ of communication. नहीं नहीं not capable like हम contact that's like seeing an ant on the table मतलब you're finding an ant on the table क्योंकि ant दिखा है but the ant is going to jump on you and kill you unless you put your kill you नहीं मतलब bite you unless you put your finger there so are you going to put your finger there मतलब ant है तो वो bite कर सकता है so you don't go that will be the same for aliens मतलब aliens have the if the aliens have the capability of fighting back or like just being a pain or having any signs of hostility or advancement क्योंकि मुझे लगता है after you reach one's point of advancement unless they have some super special evolution which makes them absolutely incapable of being hostile or violent मतलब कभी ना कभी तो होने वाला है मतलब look at But humans nature doesn't support that. हाँ नेचर मतलब वही बोल बोलता रहा हूँ है ना मतलब एकदम कुछ अजीब चीज हो गई मतलब एवोल्यूशन का कुछ तो हो गया when everybody is extremely like नॉन वायलेंट मतलब वही बोल रहा हूँ मतलब वो बहुत improbable चीज है but considering life's nature as well मतलब it is just earth's life we never know what might happen in harsher conditions or calmer conditions but that just depends on the situation it is but I mean at after one point of advancement it is just better to just observe them and stay on guard instead of just going them and saying hi hello because it could lead to both of yours extinction matlab there's no point in that. सो पर इसका भी एक वो है ना जैसे रोमाम ने बोला हमें कि इफ वी जस्ट अज्यूम दैट एलियंस एग्जिस्ट वो एलियंस का भी एक स्पेक्ट्रम होगा ना क्या वो इवॉल्व कितने हुए हैं एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं सो लाइक कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू साइड्स राइट सो लाइक बोथ साइड्स हैव टू बी capable of communicating. You can't talk to a frog, right? Vesa. So the aliens too have to be capable of communicating. And if they are capable of communicating at that point of time,
they would even like they would have developed enough, like they would have become hostile enough to us because they would have developed that. I think the first thing they should do, humans should do once they discover any sort of extraterrestrial life is just observe it for a couple of years. मतलब उनके patterns क्या करते हैं, कैसे करते हैं, how they evolved, मतलब जितना हम distance से कर सकते हैं. And once we have reached a certain level of knowledge on our मतलब on their like existence, we can approach them in specific ways to ensure that we don't harm them, we don't harm ourselves, and no conflict arises. But I mean that depends on the civilization completely. So it's a pretty vague answer. मतलब कुछ If बोल you नहीं think सकते. if you think like aliens Earth पे आए भी होंगे, like and they visit like US regularly में. हजारों साल यूएस में Men हजारों in साल. Black, Men in Black. Exactly, men in black. So if you assume कि हाँ आते ही होंगे, तो don't you think aliens का reputation काफी गिर चुका है? Because Humans के पहले वो रहते. लोग नहीं, because पहले वो लोग पिरामिड बनाते थे, और अभी आके लोगों की गाय भैंस चुरा रहे हैं. Like, don't you think that's like a big drop in their I mean, career? मैंने हाँ. पॉडकास्ट देखा था. मैं पहले पॉडकास्ट बहुत सुनता था ऐसे, मतलब यतीज और बिगफुट के बारे में से बहुत पॉडकास्ट होते हैं पॉडकास्ट. तो अच्छा आया मेरे पीछे इतना बड़ा लंबा 7 फुट का. Yeti. अ, मतलब वो मेरी 2016 स्टॉक पर मैं 2020 में सुनता था. बट एक मैंने पॉडकास्ट सुना था which used to talk about like alien stories. I don't think they claimed that to be true. नहीं, they claimed it to be true. मतलब लोगों के अकाउंट्स थे वो, उनके नहीं थे. पर लोगों के अकाउंट्स थे, वो बस Accounts are नरेट never करते थे. like, it's हाँ, a नहीं नहीं, publicity stunt at this लाइक point. मैंने ऐसे 3 ब्राइट फ्लैशिंग लाइट्स देखे, फिर एक नीचे आया एक ग्रीन, नहीं ग्रे पेल कलर के लंबे, मतलब सेम इमेज होता है ऑफ एन एलियन. मतलब एन एलियन जस्ट हैज टू बी दैट वे, नहीं तो वो एलियन नहीं है, अलग तरीके से इवॉल्व Movie भी नहीं हो सकता. depiction. हाँ मतलब एवरीबody that's also one of my problems, क्योंकि we create aliens in humans image just weirder so that we can look like safe, like very helpless people, और वो एकदम assert हाँ. कर रहा है खुद को, एकदम अजीब लग रहा हाँ. Aliens का जो We make current them image है ना, humanoid. हाँ, aliens का जो current image है, right, that is like influenced and made, totally made by pop culture, movies, है. comics, etc. उससे Books. उससे वो two-legged, big-eyed, big-head हम्म. creatures हाँ. आते हैं, ऐसे ऐसे जो या वाले. तो green Hairless. होते हैं वरना tan colored होते हैं. I don't know why. ग्रे ठीक है, भी होता है. हाँ, ग्रे भी होते हैं. exactly, tan, grey, और अगर वो कोई मिल गया वाली डॉक्यूमेंट्री है तो ब्लू भी होता है. blue भी हाँ. होता है. हाँ, बट एनीवेज ऐसा बस saying, तो उसमें क्या होता है, उसको अनकॉन्शियस, वो आते हैं नीचे उतरते हैं अनकॉन्शियस रहते हैं, उसको एक यूएफओ के अंदर ऑपरेटिंग टेबल पे डालते हैं, कुछ उसको बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ बोलते हैं उसे, कुछ करते हैं उसके साथ, और Yeah, of वापस course, छोड़ English, छोड़ के अरे चले जाते यूएसए हैं. के, अबे यूएसए के एलियंस इंग्लिश ही तो बात करेंगे. और हमेशा फॉर सम रीजन, मतलब कोई भी अबडक्शन होता है, मतलब पॉप कल्चर में भी या कोई अकाउंट्स में, दे आर ऑलवेज ऑन ऑन एन ऑपरेटिंग टेबल, एकदम ऐसे प्योर व्हाइट रूम में, एकदम बहुत ब्राइट लाइट्स है, ऐसे तो देख ले वो. एकदम क्लीन, लाइक एकदम स्टेराइल. हाँ डू यू हाँ, थिंक मतलब लाइक अगर डू यू थिंक लाइक अगर यूएस में एक्चुअली अभी भी यूएफओस आते होंगे, उन पे भी टैरिफ लगता होगा? ओके. बट यूएस ऑफिशियल्स के तुमने वो वर्डिक्ट सुना है, मतलब every once in a while, like after 3 to 4 years, a big US official comes out and says that we have evidence on UFOs being spotted in here. A F-22 spotted a UFO from its हाँ. aircraft carrier. मतलब ऐसा, F-22 haven't you? spotted a UFO from its aircraft carrier. ये क्या सेंटेंस थी? F अरे F-22 is a मतलब, fighter jet. हाँ, फ्रॉम इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब उधर था वो स्टेशन, वैसा बोल रहा हूँ. हाँ, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिबंक्ड. मतलब एक था मतलब कोई फाइटर जेट अपने आईआर कैमरा से देख रहा था, कुछ लाइक ऐसे एक डॉट मूव कर रहा था एयर पे, लाइक ऐसे प्रिटी एक्यूरेट है वो, मतलब इट डजंट हैव मैल्यूफंक्शंस, बट इट वाज जस्ट एन आर्टिफैक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट ऑफ द सन रेज हिटिंग इट. तो वो कर रहा था, मतलब सब मतलब सारे एंगल्स देखे,
उस टाइम का वेदर देखा, टाइम और देखा। अपना यूएफओ का भी एक डिपिक्शन एकदम वो क्लासिकल डिपिक्शन है। ऐसा सॉसर बॉल होगा, उसके अंदर एक रिंग होगा, छह ऐसी 5-6 लाइट लाइट आएगी नीचे बल्ब्स हो से। गए, ऐसे स्पॉटेड बल्ब्स हो गए उस पे। बल्ब्स मतलब ये जस्ट सब लैम्प्स। मतलब मूवी कल्चर से है। बट लाइक अगर अपन जाए तो डैन ब्राउन का नाम सुना होगा, नहीं। Yes. ऑथर है। उसकी सुना एक बुक है। It is about this misconception, like it's about aliens. उसका नाम है इंसेप्शन पॉइंट। हम्म। I've heard of the book. बहुत मस्त बुक है। So like what it's based on is that NASA is being privatized. मतलब they are selling NASA off to private institutions। और जैसे अपने इंडिया में NSA है ना, NSA, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, तो वैसे ही उधर CIA था शायद से। हाँ, तो CIA वैसे ही उधर CIA था, जैसे मतलब मैं इंडिया बुक में में है बोल रहा हूँ, वैसा बुक उधर में, CIA बुक था। बुक बुक में में होता है। बुक में नहीं अच्छा नहीं। ओके, बुक, सॉरी बोल सॉरी बोल। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हम्म, तो बुक में CIA था, तो एंड देयर वाज दिस, so there's one central character, will X था, he thought that if NASA becomes privatized, the national security thing will be gone, like they'll lose control over their national security. So he planted an very like an ancient creature in the depths, like it only exists in the very depths of the ocean। मतलब उसके एक मतलब देयर वर ओनली वेरी फ्यू, लाइक एक स्पेसिमेन या दो स्पेसिमेन होगा पूरी दुनिया में। ही प्लांटेड दैट ऑर्गेनिज्म इन अ मीटियोरिक शेप ऑफ अ बॉल, मतलब वो मीटियोर था, एंड ही प्लांटेड इट। और उनने तो ऊपर से होता है ना, इनसैट सैटेलाइट्स होता है, पता है? तो उसने वैसा कहा क्या, नासा की सैटेलाइट ने वो डिटेक्ट किया अपने अर्थ के सरफेस पे, और वो नासा की सैटेलाइट एक्चुअली फॉल्टी थी, सो इट वाज जस्ट अ प्लांटेड थिंग। एंड सो दैट नासा डजंट बिकम प्राइवेटाइज्ड, ही डिड ऑल दिस, एंड ह्यूमंस एक्चुअली like they actually believed him, and NASA became a very big thing. And in the end, like in the last plot, everything becomes disclosed, or then the like the other part of the story takes over। तो मतलब humans have always been so fascinated with aliens that they'll try to do anything to prove it right। हम्म। पढ़ो बुक, बहुत बहुत मस्त बुक है। I wanted to talk about like Area 51. Even though मैंने बचपन में उतना नहीं सुना Area 51 के बारे में. Like you always like eventually you hear about Area 51 and you don't know what it is. But Area 51 is supposedly a military base again in USA because USA में ही होते हैं aliens. हाँ, और like the entire Area 51 thing started in 1989 by a man named Robert Lazar. Okay, who claimed that he लगा। worked on extraterrestrial technology inside Area 51. Right, तो हम्म। उसने ऐसे रिपोर्ट किया, उसने बताया कि he had seen autopsy photographs of aliens inside the facility and the US government used the facility to examine recovered alien spacecraft। अभी ओ। उसके हिसाब से like although he himself was discredited, उसके claims के हिसाब से multiple government conspiracy theories थे in which बट most आई थिंक, of those conspiracy theories were related to extraterrestrial life. but Area 51, like, of course, it's a myth, but Area It 51 is real. developed. It is a it is a myth that the aliens exist there। नहीं 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 नहीं, वहाँ aliens है। हाँ मैं बोल हाँ रहा मैंने हूँ हाँ ना, देखा है, हाँ। अरे मैंने देखा है believe me, भाई। है उधर, मैंने देखा है। हाँ वही तो, मैं हम लोग मैंने गए थे एक दिन, हम ट्रिप में गए थे वहां पे। गए थे हम लोग ने देखा है। हाँ, but keeping the jokes aside, I think मुझे it जादू को जोक मारने का जोक बोल बोल यार। कोई मिल डॉक्यूमेंट्री में, हाँ। जादू को उधर से निकाला, डॉक्यूमेंट्री से डायरेक्ट पिकअप। पर मतलब वो डेवलप इसके वजह से हुआ क्योंकि वो मिलिट्री बेस को बहुत सीक्रेट रखा था। बहुत बहुत मेरे गंदे को जोक। Area 51, the myth got developed because like Area 51, the military base, it was in the open,
but it was restricted a lot. Like it's in the desert, I think US के desert में, हाँ desert part of the region में जितना मैंने देखा है, supposed sightings. नेवाडा में. हाँ, Nevada. So it's a desert. So मतलब it's in the open, but people aren't allowed to go there. Like it's a very restricted area. military And base. some like हाँ military base है. But what happened was this guy like मेरे हिसाब से जो हुआ Lazar. क्या था उसका नाम Lazar. 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 Lizard. Lazar. ठीक है जो भी था ये random guy he started it and because this was so secretive मतलब इतना वो था people started to make theories out of it and suddenly it became a trend and it blew up. I mean, I think फिर बाद में it really quieted down. But with the advent of like the internet and digital technology and whatever, the things just got worse क्योंकि वो लोग images लेते थे, spread करते थे, theories बनाते थे. But there was never a greater peak than the 2016 Area 51 raid. I mean, no, Raid. but raid. Raid. तूने नहीं देखा है वो? Raid. देखा नहीं, है रेड नहीं देखा मतलब तुमने नहीं. basically वो एक 2016 वीडियो है में ना अंदर जाता है नहीं रुक so basically 2016 में there was a post on Facebook कि Area 51 में कुछ तो है and it's fishy we should go and raid it और वो Facebook पे डाला था and event होता है तो लोग ऐसे interested ऐसे thumbs up करते हैं कुछ बोलते हैं और वो दिखाता है सबको लाइक नहीं कुछ तो होता है इंटरेस्ट लेके आई एम कमिंग तो वो अच्छा. बोलते हैं लाइक सम डेट मैं भूल गया हूँ कि वो डेट पे हम जाएंगे सब रेड करेंगे and around 1 or 2 million people said I'm interested. कितने लोग And आए? लाइक गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन था I don't think so government का reaction था, but considering कि 1 या 2 million या 6 million मुझे याद नहीं सच्ची में याद नहीं, but it was in the millions. और तभी मतलब they will obviously be on high alert that अगर वो joke भी हुआ even if it's just satire, even if like 10,000 people show up और वो अचानक से अंदर आने लगे, they cannot just do a mass shooting. मतलब they were just on high alert, but I think a grand total of 20 or 30 people came. But वो आए और तब से another meme was born, the Sonic run. I don't think you know it, but ऐसे it's just bending down, हाथ ऐसे पीछे करके से दैट्स अरे वो तो डर एनीमे रन है दैट्स यार द वो. नारुतो रन हाँ दैट्स नारुतो द रन है. नारुतो रन नारुतो सॉरी सोनिक रन नहीं था वो नारुतो सोनिक भी वैसे ही भागता है नारुतो रन ऐसा वाला ना हाँ आई देखो थिंक वो हाँ नारुतो रन था वो सोनिक भी वैसे भागता है ठीक है मैं भूल गया हूँ देख मैं ये आई सोनिक लुक सोनिक ऐसे नहीं भागता सोनिक रोल्स पैर अरे नहीं हाथ किधर रहते उसके भागते वक्त. रुको चलो सोनिक रनिंग मैं ये वही सोनिक सर्च कर ऐसे ही रहा हूँ. भागता है ऐसे ही भागता है हाँ उसके सोनिक हाथ पीछे होते हैं. हाँ 51 नहीं बट वो नारुतो से ज्यादा रिलेटेड है नहीं आई थिंक वो हाँ ठीक है अभी नारुतो आगे रन हाँ नरूटो रन ही था एनीवेज सो इट बिकेम अ बिग मीम क्योंकि तभी न्यूज रिपोर्टर्स भी आए थे वहां पे कि मतलब ऐसे 10 मिलियन नहीं क्या बोलो मतलब मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम क्या होने वाला है बट एसेंशियली गार्ड के यहाँ मतलब जो एंट्रेंस है वहां पे से 2-3 गार्ड थे विद लाइक मशीन गन और फिर हंस हंस के देख रहे लोगों को ऐसे मशीन गन के हाथ में एंड दे जस्ट स्माइलिंग व्हाइल दे जस्ट नरूटो रन नियर द गेट एंड दे जस्ट डू नथिंग मतलब जस्ट हैंग आउट मतलब but कुछ tell किया me नहीं why did they choose for Naruto running? I don't know. It just became a meme. I mean, it was like obvious from the start that it wasn't like a real operation or like a raid. ये वो Facebook पे डाला है of all places. I mean, Of all places Facebook पे Mark Zuckerberg एरिया फिफ्टी alien वन lizard alien lizard guy. हाँ है वो alien lizard है इज वो. द एलियन But हाँ I तो don't know. एरिया 50 I don't know why he's related to a lizard though. पहले से दिखता है आई थिंक ही दिखता आई था थिंक ही जस्ट he हाँ like there's no expressions on his I face mean, if you it's look just at his blank eyes a and his robot face, like his He kind of eh, does remind me of I am Rango. a robot I, It's like अलग हाँ से but clip निकाल के. मतलब उसके फेस में इमोशन दिखता भी नहीं यू कैन नॉट परसीव मोशन ऑन हिज इमोशन मोशन इमोशन ऑन हिज फेस
But leaving that aside, uh, that was like the biggest or the second biggest thing that happened in 2016. Area 51 को उसके बाद ऐसे they just made it into even more like ऐसे meme area में डाल दिया उसको instead of the conspiracy side. और उसके बाद थोड़ा die down हो गया. But the Naruto run that happened in Area 51 became iconic for a long amount of time. And now अभी वो पूरा खत्म हो गया किस्सा. It's just one of those classic memes जो 2016 में हुए थे. बहुत चीजें 2016 में हुई. Anyways, But aliens. एरिया 51 कुल आई थिंक वेनम 3 में अच्छे से मतलब लाइक द डिपिक्शन ऑफ एरिया 51 द मिथ में एरिया वेनम 3 में 126 था ना कुछ तो? हाँ पता नहीं बट जो भी है मतलब आई थिंक द दे ड्रोव इंस्पिरेशन फ्रॉम द एरिया 51 myth तो वेनम 3 जिसने कोर्स देखी है यार, वो उसको तो पता होगा ऑब्वियस था। हाँ ऑब्वियस पर था यार मतलब वो तो। they depicted it like quite nicely like there's an underground thing where there are aliens they are researching about aliens and उधर शायद से एक फैमिली भी जा रही थी वो एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आई डोंट हाँ, रिमेम्बर द फैमिली हाँ सो लाइक वेनम 3 में बहुत अच्छे से देखा डिपिक्शन है किया हम है लोगों ने। इवन दो द साथ में ही तो वेनम देखा है 3 हम नहीं लोगों देखा है तीनों ने। हाँ 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 हम तीनों ने साथ में ही तो देखा है लास्ट डांस। हाँ 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 आई फॉरगॉट जो भी था पर हाँ उसमें अच्छा डिपिक्शन है So I wanted to tell you guys about the Betz mystery sphere. So it's like BETZ mystery sphere. So Hmm. this was a sphere which was found by a family of three in Florida in 1974. So it was like a metallic sphere, uska about 20 centimeter in diameter and about 10 kilograms heavy. So Hmm. ये लोगों ने ये find किया था on they found it on uncovered it at Fort George Island, Florida. Hmm. So that's about the size, not the island, but the sphere was about the size of a bowling ball. So वो लोग of course घर लेके चले and कुछ दिनों बाद वो फैमिली में तीन लोग थे by the way. एंटोइने I think is how you pronounce it. Antoine. Jerry and Terry. Terry Antoine. was the son. So एंटोइनी Antoine. Antoine होता है I think. okay, okay, ANTOINE है. मैं एंटोइने बुला रहा हूँ, जिसको कोई दिक्कत हो I don't care. ठीक है. तो ठीक है a few days after they uncovered this metallic ball, वो लोगों ने टेरी अपने घर पे, the Terry that is the son, he was playing the guitar. Or was sphere, like the sphere seemed to react to the sound of the guitar, and it made a throbbing noise. Later later the sphere was noticed to roll on its own and even stop on its own and change direction as well. Terry started doing experiments with the sphere. He noticed that the sphere would reverberate when hit hammer. He also found that the sphere would move after being shaken and placed on the ground. And the beds, मेरे को पता नहीं ये लोगों का बेट्स ये लोग का नाम सरनेम है, but the Betses reported that the sphere moved on its own several times and that it would follow people around the house seemingly on its own. And eventually they stored the sphere in a trunk and only took it out to show to friends and family. So Hmm. these people found a random sphere और ये लोग घर लेके चले गए. And when the sphere started acting like weirdly, ये लोग इसको एक ट्रंक में बंद कर दिए and they just took it out to show friends and family. So हम लोगों को रैंडम स्फीयर मिला है जो हम लोग को पता नहीं क्या करता है. हॉन्टेड है, कोई अलग ही टेक्नोलॉजी, किसी को नहीं पता, बट निकालेंगे हम लोग दिखाने के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली को. Guys, मैंने एक अराउंड हाफ अ ईयर को मैंने एक ऑडियो बुक सुना था या ऑडियो मूवी सुना था क्योंकि अलग अलग वॉइसेस थे. बट इट इज रे ब्रैडबरी. ऑल ऑफ यू नो रे ब्रैडबरी, मतलब आईसीएसई, द आईसीएससी वाली पेडेस्ट्रियन. पब्लिक आई मीन पता ही होगा उसकी अनदर और एक स्टोरी है जीरो आर, जिसका मैं कवर पेज तो मैं व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, देख लेना. और मैंने लाइक हमें भेजा है, ये, ऑडियंस को नहीं. हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे सब ऑडियंस को नहीं भेजा. डिस्क्रिप्शन में होगा अरे मैं नहीं, देख के वो डिस्क्रिप्शन में भेजेगा एडिट इन क्या? करूंगा यार. डिस्क्रिप्शन पिक्चर कौन डालता है? It's pretty unsettling for what it is, and it's a pretty good story. I mean, मैंने तो सिर्फ ऑडियो मूवी मोड में देखा. ई बुक वाला भी अच्छा होगा, मतलब पेपर वाला. बट इट गिव्स अ प्रेटी गुड एटमॉस्फियर. बहुत अच्छा है.
it's related to like extraterrestrial life or whatever we are talking about. And some Aliens. kids, uh, kids is, matlab kids with an apostrophe S, kids is imagination and parents skepticism. मतलब बहुत चीजों के बारे में बात की. इट वाज जस्ट अ जनरल डिस्कशन. हमने बहुत सारे स्पीयर्स में हमने हमारी नाक नहीं डाली है. आई मीन पार्ट 2 हो सकता है. We never really know. There's infinite things to talk about aliens, but I would just like to say as an ending thought to people who uh, consider aliens existence or not just consider aliens or are interested about it. Oops. Anyways, I would like to say that even if aliens are there or Be not, because safe. we truly don't have 100% shut case evidence of aliens. Even if there are aliens, we so I would like to say to people who consider aliens in general that even if they do or do not exist, they might exist, but we don't have 100% like open and shut case of like aliens existing. I would just like to say that even if they exist or they don't exist, we know that we exist, and we should be amazed at human life and its achievements itself instead of boggling our heads, like just going into do aliens exist or are there intelligent life? Like is the greatest achievement that we know of that we exist. Matlab, the sheer chances of that even happening and we existing and we talking through say internet ke through, matlab, that is just amazing in itself and we should really appreciate it. And the term alien exists only because we do. I mean, not the term, the word alien, but aliens exist because we exist, because they are alien to us. Okay, okay, समझ गए, Fath- समझ गए, समझ We गए. fathom the Dev, you want to say possibility of anything? aliens. Dev, do you हाँ, want to say anything? हाँ, मैं like एक लास्ट थिंग. अभी रिसेंटली K218b एक प्लैनेट है. वहाँ मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसे हम्म, कंपाउंड्स मिले तो मतलब बैक्टीरियाज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं, मतलब ट्रेसेस मिले. रिलीज करते हैं. तो लाइक दिस इज हम. क्या बोला, रिलीज करते हैं. हाँ, ठीक ठीक है. हाँ. ओके, कंटिन्यू. हाँ, मतलब तो वो कंपाउंड्स मिले हैं. तो लाइक देयर इज एविडेंस एंड आई थिंक मेरे हिसाब से कि finding alien life is maybe or is the greatest achievement of humanity, because finding an alien life will probably be very different than our human life, like हाँ, human organism. उसकी probability बहुत ज्यादा है. तो मतलब finding a different organism, and एक possibility है कि computer theory पता है, like if we can simulate life, we may be in a simulation of another alien, हाँ. and we are I mean, nearing that's towards another it. alien. Uh-huh. And one more is that aliens planted us on Earth, and we are just an I think these experiment. were like closing thoughts. हम कर Exactly. रहे. So, what I think is that the probability of aliens existing is quite high, even though people don't accept it. But until we find concrete evidence, we cannot say by like 100% surety that aliens exist. But uh, they are quite it is quite intriguing to think about it, that there may be other organisms except us existing in this universe. Okay, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की है. मैं कुछ चीज़ें बोलना. जकरबर्ग एलियन शिप के लिए जादू धूप के नशे करता है. यूएसए में यूएफओ पे टैरिफ पड़ता है. जेई छोड़ो, नीट छोड़ो, यूएफओलॉजी करो, मजे करो, गुड नाइट एंड गेटिंग